Good morning, lovely children. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science Teacher, St. Joseph Public School, Town. Students, let's discuss some of the conditions. कुछ situations यहाँ पे share करते हैं before starting our today's video. A cup, a drink containing ice cubes, when it is kept in a hot room, what happens? First of all, that ice starts melting and then eventually that drink warms up. If I put one spoon in a cup which contains hot chocolate, what happens after some time? The spoon will become warm up, that will warm up. Have you ever thought why does this happen? ऐसा क्यों होता है? Why did ice start melting and then that liquid, that drink, that became warm up, and why that spoon which is kept in the hot chocolate, that became warm up? It is just because of the flow of heat. It is just because of the transfer of heat. So today's video's topic is transfer of heat part 1 in continuation of our chapter number 4 of science, heat. So this heat, it always transfers from the body which is having high temperature to the body which is having low temperature. हीट हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी? जहाँ पे हीट ज्यादा है वहां से हमेशा वो फ्लो करती है उस डायरेक्शन में जहाँ पे हीट कम प्रेजेंट है. एंड दिस फ्लो, दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, इट कंटिन्यूअस टिल बोथ द बॉडीज दे एक्वायर द सेम टेम्परेचर. जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ कंटिन्यू रहता है. There are 3 modes of transfer of heat, how this heat can be transferred from the one body to the another body. And to understand it very well, the 3 modes of transfer of heat, we can discuss one simple example here. Just assume, students, today is my birthday and we all are in a classroom and I am having handful of chocolates. And I want to share those chocolates in the celebration of my birthday with you all, right? And that would be possible only, the condition is when you are sitting in my classroom, not at your home and watching this video on your mobiles or laptops, right? So I have 3 options to distribute, to share those chocolates with you all. The first way can be, like there are the students sitting in rows in the classroom and I can hand over my one chocolate to the student who is sitting in the first row, and that student will hand over the chocolate to the second row student, then to the third row student, and so on. And in this way, that chocolate, they will be distributed to all students in the classroom till each and every student gets one of them. जब तक सबको एक ही चॉकलेट नहीं मिलती तब तक इसी वे में कंटिन्यूएशन में चॉकलेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. मैंने एक को हैंड ओवर की, उसने अपने साथ वाले को, नेबरिंग को सेकंड को हैंड ओवर की, देन थर्ड को, एंड सो ऑन. The second way can be for the distribution of chocolates is, like one of the students can come to me, collect his or her chocolate and went back to the classroom, जहाँ पे उसकी सीट है वहाँ पे वो वापस चला जाता है. Then the another student come to me, takes his or her chocolate and move back to the seat, अपनी सीट पे वापस चला जाता है. And that process can be continued जब तक सारी क्लास में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं. And the third way which I can have used, that is I can directly throw those chocolates towards you all, and you students keep on catching those chocolates sitting at your own position without any sort of movement. आपने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं एंड मैं चॉकलेट्स को डायरेक्टली थ्रो कर रही हूँ एंड आप लोग उनको कैच कर रहे हैं. So these can be the 3 ways by which chocolates can be distributed in all the students or in children, among the children. So थ्रू दैट एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के जो डिफरेंट मोड्स हैं. द फर्स्ट वे विच वी डिस्कस, दैट वन स्टूडेंट कैन गेट चॉकलेट, दैट कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट, दैट कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट, एंड सो ऑन. दैट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंडक्शन. अगर इस वे में अगर किसी एक दीज स्टूडेंट, दे कैन बी कंसिडर एज अ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अगर एक पार्टिकल के पास हीट जा रही है एंड दैट पार्टिकल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्चुअल मूवमेंट, उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, व्हाट दैट पार्टिकल डज, इट जस्ट हैंड ओवर दैट एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल एंड देन नेक्स्ट एंड सो ऑन. So this kind of mode of transfer of heat is called as conduction. The second way which we discussed, what was that? It was that students were coming one by one to me
and they were collecting their chocolates from me and moving back to their seats. Right? Instruments को हमने क्या consider किया है? As the particles. So these particles are coming one by one to the source of heat, getting the heat energy and moving back to their position. That sort of transfer of energy or heat is called as convection. The third mode जो हमने डिस्कस किया था अभी, that was throwing of those chocolates directly towards you and you keep on catching them, right? So that kind of mode of transfer of heat, जिसमें कोई भी particle अपनी जगह से movement नहीं कर रहा, heat is directly reaching to that particle, right? That mode of transfer of heat is called as radiation. In today's video, we will discuss in detail about the conduction also. हम conduction थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं. Let's talk the matter, the state of matter in which the conduction, the mode of conduction of transfer of heat takes place. Generally, this mode of transfer of heat takes place in the solid states of matter. जितने भी solids होते हैं, they all are tightly packed. They cannot move from their mean position. उनके अंदर इस टाइप का movement होता है heat का through the conduction. We can explain it with the help of simple activity. Simple activity से हम चीज को अच्छे से explain कर सकते हैं that how conduction takes place in the solids. Solids में heat का conduction कैसे होता है. For that, what I'll be needing a stand. मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? एक stand यूज किया है, right? इस stand पे ऊपर से मैंने यहाँ पे क्लिप की हेल्प से एक आयरन की रोड को अटैच कर दिया. दिस इज द आयरन रोड, दिस इज द स्टैंड एंड दिस इज द आयरन रोड. Right? Iron is a metal which is found in the solid state. ये हमेशा solid state के अंदर exist करता है. And then I can use some iron nails. मैंने iron nails या iron के pins को मैंने use कर लिया यहाँ पे. And उनका जो head होता है, वहाँ पे कुछ molten wax को melted condition में जो wax थी, पिघली हुई wax, उसको यूज किया. तो ये मान लो ये एक आयरन नेल है, उसका जो हेड पोर्शन होगा वहां पे थोड़ी सी मोल्टन वैक्स को अटैच कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वैक्स वी क्लिंग दोज नेल्स ऑन दिस आयरन रोड. हमने इस आयरन रोड से उन पिंस को, उन नेल्स को अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ मोल्टन वैक्स. At the end of this iron rod, here I am having a Bunsen burner or any candle. मैं यहाँ पे कोई कैंडल या Bunsen burner यूज कर सकती हूँ जिससे फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. We are giving heat, we are providing heat to this end of this iron rod, right? But within few seconds, what we will observe, हम क्या देखेंगे? That all these pins, iron nails, they will start falling one by one. The nail which is present closer to this flame will fall first and the pin, the iron nail which is present farthest to this flame will be falling at the last. वो सबसे last में गिर जाएगी. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? It is because the heat is reaching to this end of this iron rod, but this iron, it is a solid. And what is the structure of solid? In solid, all the particles are tightly packed with each other, having no space. पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, सब क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है. सो इफ द एनर्जी रीचेस टू वन पार्टिकल, then this one particle is going to hand over that energy to the next one and then to the next one. In this way, heat is coming to this end of the iron rod and it is continuously traveling, transferring through this rod to the end of the rod. वो बिल्कुल end तक वहाँ पे traveling कर रही है. So this simple activity shows, it proves that through the conduction, transfer of heat takes place in the solid. Solids के अंदर heat का conduction होता है. अब बात करते हैं, there are certain features, certain conditions required for the transfer of heat through conduction. क्या क्या वो conditions है? The very first condition is it requires a medium. अगर कंडक्शन के थ्रू एनर्जी का, हीट का ट्रांसफर होना है तो वहां पे कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए. वैक्यूम के अंदर जहाँ पे बिल्कुल भी कोई मीडियम नहीं होता, एयर प्रेजेंट नहीं रहती है, वहां पे हीट का कंडक्शन नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल पॉसिबल. The second condition is it takes place in solids. Because हमने बात की थी, what the conduction is. Conduction is the way of transfer of heat in which particles are not actually moving from their position.
कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूवमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, हीट को पास ऑन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्टिकल्स. सो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. एज द सॉलिड, all the particles are tightly packed, they cannot move from their mean position, so heat can be easily conducted through this mode of conduction, right? The third condition is solid bodies should be in contact with each other. Say I am having two metal bodies, मेरे पास two metal के containers हैं, and both those containers, in the first metal container I poured the hot boiling water, and the second metal container I poured cold water. मैंने चल जो water था वो वहाँ पे pour किया है, and they are placed apart from each other. उन दोनों को थोड़ा दूर दूर रख दिया. These two metal containers are not in the contact of each other. वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. In that case, do you believe that the container which is having cold, that water will become warm? वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा because of that warm water placed in the another bottle. No, it's not possible. But if I does this by keeping both these containers, ये जो metal के containers थे, इन दोनों को अगर बिल्कुल adjacent position में, अगर पास पास में रख दें और एक के अंदर बिल्कुल hot boiled water है and second container is having chilled water, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, in both the containers the temperature of water will become equal. वो same हो जाएगा दोनों के अंदर, because when these two are in a touch of each other, they are in contact of each other, the conduction mode of transfer of heat can take place. So in the conduction, heat energy travels from the body which is having high temperature to the body which is having the low temperature. We'll get to know more about this conduction mode of transfer of heat in our next video. That's all for today's video. Thanks for watching.